You see, there comes a term called specific machining energy. Okay. So, what exactly is that? Whenever in thermodynamics also you observed that specific terms come behind something, there you used to divide by volume. Yes, and that property became specific. Similarly, in machining, a term is there called a specific machining energy or a specific cutting energy. So, what exactly is specific machining energy? It tells you about how much energy consumption is there per unit MRR. That's what we call as specific machining energy. How much energy consumption is there per unit MRR. So, if you look at grinding operation, that is specific machining energy term, I told you, is machining energy per unit MRR. In grinding, what do you observe? How is the MRR? You all know in grinding, the metal removal rate is very, very less as compared to any other conventional machining process. Grinding operation में जो ये metal removal rate होता है वो काफी कम होता है दूसरे किसी भी conventional machining के तुलना में, और इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों ऊपर से moreover, if you observe the grinding wheel, as I told you, it has grids. And if you observe it closely, what you find that most of these grids which are there in the abrasive wheel, their rake angle for most of them is like negative. Negative rake angle does not mean that it will not do machining. If it is too much negative, then that will not be able to do shearing, that will only do plowing and rubbing. But my dear, if the grids, if you observe, like out of 1,000, some 700, 800 grids will be like having negative rake, though they will be able to shear the material. So due to those negative rake grids and most of them over there, what happens that the force experienced by those grids and hence by the grinding wheel in most of the cases is very high. The force during grinding will be very high. So since the force will be very high, at the same time, velocity will be very high, energy will be very high, and MRR will be very less. So machining energy is very high, MRR is very less. So because of that, this specific machining energy term for grinding operation is very, very high. And out of all the conventional processes, conventional machining processes, obviously, the specific machining energy consumption in grinding is the highest, right? The specific energy consumption in grinding is the highest. और ये 1 मार्क में खूब पूछा जाता है, ये स्पेसिफिक मशीनिंग एनर्जी कंजम्पशन इज हाईएस्ट इन, नीचे ऑप्शन दे देंगे टर्निंग, ड्रिलिंग,
रीमिंग, वोरिंग, ऐसे करके, राइट। तो वहां पे आपको याद रखना है कि इट इज द हाईएस्ट देयर इन केस ऑफ व्हाट वी से grinding. Next, we are going to discuss the different types of grinding operation, and obviously we are going to start first with the one named as centerless grinding. So what exactly is centerless grinding, my dear? I'll show you first one video of centerless grinding. Thereafter, you are going to enjoy the process. Temperature is 30 degrees centigrade, mostly cloudy here in Maharashtra, in Mumbai. आपके यहाँ कैसा है वैसे मौसम? मौसम है औसम। बंदर मामा, ओहो बंदर मामा। What centerless grinding? Hey, मूवीज में अच्छी लगती है, हॉलीवुड दिखेगी अब देखो यहाँ पे क्या है, दो ग्राइंडिंग व्हील आपको दिख रहे हैं, राइट। इस तरफ एक समथिंग लाइक येलो टाइप का है और उधर पता नहीं ग्रीन ब्लू का मिक्सचर कुछ भी है। तो यहां होता ऐसा है, इन दोनों ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है, बट इनमें से ये जो आपको येलो वाला व्हील दिख रहा है इसको बोलते हैं रेगुलेटिंग व्हील, और उधर उस तरफ जो दिख रहा है उसको बोलते हैं हम लोग ग्राइंडिंग व्हील। और इस बीच में यहां पे कुछ ऐसा एक खड़ा सा दिख रहा है, एक्चुअली वो उसके ऊपर वर्कपीस को रखा जाता है, ठीक है। और उसका शेप अगर देखो यहां टॉप पे तो कुछ ऐसा स्लोप दिया गया है ना, जैसे ब्लेड देखते हो, ब्लेड, तो ब्लेड का जो एज होता है उसके ऊपर एक स्लोप रहता है ना, वैसा ही कुछ यहां स्लोप दिख रहा है। और यही रीजन है कि इस वाले खंभे टाइप का जो दिख रहा है यहां पे उसको हम लोग वर्क रेस्ट ब्लेड बोलते हैं, और उसके सरफेस पे इस तरह का एक ऐसा स्लोप होता है, इंक्लिनेशन होता है, ठीक है। इस वर्क रेस्ट ब्लेड पे क्या रखा जाता है, वर्कपीस को रखा जाता है। इस तरफ ये ग्राइंडिंग व्हील जो है बड़ा वाला, ये मशीनिंग का काम करता है, और ये येलो वाला जो ग्राइंडिंग व्हील है
ये वर्कपीस को रेगुलेट करने का काम करता है, और वर्कपीस को कहीं भी पकड़ के नहीं रखा जाता है, होल्ड नहीं करवाया जाता है। वर्कपीस इस वर्क रेस्ट ब्लेड पे फ्रीली बैठा रहता है। ठीक, अब चलिए, अब एक लंबा सा सिलिंड्रिकल वर्कपीस है, मान लो उसकी ग्राइंडिंग करनी है, तो यहां पर सर वो लंबा सा वर्कपीस कैसे ग्राइंड किया जाता होगा? सर जी, यहां पर जो हमारा ये वर्क रेस्ट ब्लेड है उसके ऊपर कैसे इस वर्कपीस को रखा जाता होगा? बाय द वे, very simple, what I told you there, that in case of this centerless grinding operation, there is this large size wheel, which is what we call as grinding wheel, that is doing most of the cutting of the workpiece if you keep the workpiece over here. So let us say this is the cylindrical workpiece, and then there we have this grinding wheel, and we have there the another grinding wheel like this. Yes, and this work rest blade, this is the front view, that's why it is looking like that. It is there behind like this, right? It will go inside, it will go inside like this, it will be there. Okay, and this cylindrical workpiece will be fully cylindrical like this, and that will be there like that. Okay, this is that cylindrical workpiece. So basically what happens, both the grinding wheel will rotate, my dear, the regulating wheel as well as the grinding wheel. So for example, it is rotating there in this direction, so this workpiece will rotate, if you observe, in that direction, and this grinding wheel will be rotating in this direction. Okay, and that grinding wheel which is there is what you are naming as, this is the regulating wheel, and this is the main grinding wheel. As from the name itself, it is clear that the work of this regulating wheel is to simply regulate the workpiece. That means because of the rotation of the regulating wheel, my dear lovely students, the rotation of the workpiece will be controlled. Not only the rotation of the workpiece, but my dear lovely students, rotation of, the workpiece, which is like long from here up to that. So right now, if you observe, then only this much portion is being grinded, na? Only this much portion of the workpiece is being grinded, because that is the thickness of the grinding wheel. But the grinding has to be progressed onto these surfaces as well. That means this grinding wheel needs to be fed in this direction. इसका मतलब इस ग्राइंडिंग व्हील को इस डायरेक्शन में फीड करना होगा. Now, do you feed it? No. So, sir, how is the feed given to the workpiece? This regulating wheel and grinding wheel combination is responsible for even not only rotating the workpiece, but also for feeding the workpiece in the longitudinal direction. वो कैसे होता है सर? वो ऐसे होता है basically, like this is that axis of this grinding wheel, and this over here is this axis of the grinding wheel, right? The thing is, their axes will not be parallel.
Suppose there is the grinding wheel. There is this grinding wheel, grinding wheel, regulating wheel, and one more thing I'll tell you. The regulating wheel is rubber bonded or plastic bonded. Why? Because if it is a rubber bonded wheel or plastic bonded wheel, then it will have a very good hold, a very good grip over this workpiece. अगर ये रेगुलेटिंग व्हील को प्लास्टिकली बॉन्ड करोगे या रबर बॉन्ड इसमें डालोगे तो इस रेगुलेटिंग व्हील का जो ग्रिप है वर्कपीस के ऊपर वो काफी अच्छे से होगा. समझ में आई बात? द रेगुलेटिंग व्हील विल हैव superb grip over the workpiece. That's why the regulating wheel is plastically bonded or rubber bonded. So what I'm telling you is this is a grinding wheel, so it has this axis. This is that regulating wheel, it has this axis. Their axes are not parallel. These two axes, this grinding wheel axis, that grinding wheel axis, they are not parallel. Then how are they, sir? They are like this. Yes. Means this grinding wheel, it will have the axis like this, horizontal. But this regulating wheel will actually be sloped in such a way that this regulating wheel will be sloped in such a way, that you can observe now, there is an angle between the two axes. Did you understand? Hello, people. Grinding wheel axis is like horizontal only, but its axis is not horizontal. The regulating wheel itself is sloped, is given certain angle so that its axis slopes down like this. And then if you observe from this side means you are observing from this side. So there will be an angle between the two wheels. Let us say that angle over there is theta. Let us say the angle over there is theta. So, what is the situation? Let me tell you. महबूब मेरे जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है महबूब मेरे तू है तो दुनिया इतनी हंसी है महबूब मेरे ये क्या हुआ ओके तू है तो ये दुनिया तो जन्नत है अपनी
Okay. So you know this workpiece, this grinding wheel is rotating in this direction. This wheel named as what wheel? Regulating wheel is rotating in that direction, and this wheel, so this workpiece is rotating in sorry, in this direction. Okay, and this is your work rest blade, as all of you know it. Yes, upon which the workpiece has been held. So what I told you, this wheel named as regulating wheel not only controls the rotation of the workpiece, but it is also responsible for feeding this workpiece in the longitudinal direction. And Sarji, how does it become possible? So what I told you, this is the grinding wheel, its axis is like this. This is the regulating wheel, its axis is not like that, it is sloped a little, so there is an angle between them. So how will you be able to observe that? Suppose if you observe it from this side, so it will look like, the grinding wheel will look like this kind of rectangle from this side. If you see, from this side if you observe, and this will also look like that, a straight line. Okay, so the view that will come from this side is what I am going to tell you. Okay, this is like the grinding wheel, and this over here is the regulating wheel. So grinding wheel's axis is there like this, and the regulating wheel axis is like that.
So if you observe, there is this angle between them, right? So if you observe, there is this angle between them. Anybody having any problem in understanding this? That the two wheels are actually, their axes are actually not parallel. Yes, actually they are sloped at certain angle. Fine. So what I'm gonna tell you is, let us say the grinding wheel has this diameter a small d. This will be the diameter, right? And let us say the regulating wheel is rotating at this speed n. So the surface velocity for this grinding wheel will be, my dear, the surface velocity for this grinding wheel will be, my dear, how much? The surface speed for this grinding wheel will be pi d n. Yes. The surface speed for this wheel will be, my dear, pi d n. Now, if you observe this workpiece now over here, so what are you going to see is or so whatever is the surface velocity over here, the same velocity will go on to the surface of what? The workpiece. And basically the workpiece axis and the grinding wheel axis are parallel. They are like horizontal. So there, the velocity pi dl, see, since it has been sloped like this, in this direction, it has been sloped. So the axis is sloped like this. So that surface velocity will not be exactly vertical, right? That surface velocity will not be like fully vertical, but it will be sloped. But it will be sloped something like this. Not vertical. It will be sloped something like this. So this will be your pi dn. And with vertical, how much angle will it make? Since with the horizontal it is theta, right? So how much angle it is going to make with the vertical? My dear, since this has been sloped by this angle theta, so here if I observe this direction, Theta, sir. so this will be also
theta. Yes, because that is that slope it has got. So in this direction, there will be the component of this velocity pi dn cos theta. So in this direction, there will be another component pi dn sin theta. Yes. So because of this angle between the two wheels, because of the angle between the two wheels, just a minute. Yes, because of this angle of the regulating wheel, the workpiece will get an automatic feed of pi dn sin theta. Yes, and this you can observe very clearly if I show you the real centerless grinding operation, which was here in many videos. So you will be able to realize the fact, yes, sir, this is actually happening. Automatic feed. But isn't it looking like barrel? No, barrel thing. This. What is that? Cartridge. Zabardast. Maza. Maza आया? All of you? Did you understand centerless grinding, my dear? Yes, sir. So there I have written a small d. So undoubtedly here I should also write small d. So if you take d, dia of regulating wheel, in millimeter, and then n is speed of rotational speed of regulating wheel in RPM, theta is angle of inclination of regulating wheel. So this feed will have the unit millimeter per minute. Yes, this will have the unit millimeter per minute. So automatic feed will be there in the centerless grinding process.
सर हाँ सर जो रेस्ट ब्लेड का जो इंक्लाइंड है उस इसका थीटा से कोई लेना देना थोड़ी है। क्या? जो रेस्ट ब्लेड जो आपने दिखाया है जहाँ पर वो पॉइंटेड है वर्कपीस, जो वो हाँ इंक्लाइंड है, उसको उस थीटा से कुछ लेना देना नहीं है ना। नहीं, उसका कोई थीटा से लेना देना नहीं है, ठीक है सर। क्योंकि रोटेट ही करना है ना, तो रोटेट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो फ्लैट सरफेस पे रोटेट करे या स्लोप सरफेस पे रोटेट करे, रोटेशन को आसान बनाने के लिए वो सरफेस को स्लोप किया गया है। ओके सर। ओके, यस सर। नाउ there is one problem in centerless grinding. What problem is there? If suppose this workpiece is too small, means length is very small and diameter is too large, will you be able to grind that workpiece by centerless grinding? No, you cannot. That will become very difficult. Diameter large, length small, controlling it will become very difficult, cannot be done. Moreover, as you saw there in that video as well, there was nothing to, hold the workpiece. Workpiece is being held between the grinding wheel because of the pressure of the regulating wheel on it, right? And you know that when that grinding happens, some wheel wear will also happen. Na? So due to that reason, and moreover, that grinding wheel surface, every time it will not remain fully circular. There can be some high spots on it, or there can be some like valley type of space over it. So because of these things, and since there is no hold of the workpiece, external holding is not there, it's freely rotating and being fed freely. So grinding it exactly concentrically is difficult. In centerless grinding, doing exact concentric grinding is very difficult. Now, what you observe there is centerless external grinding. My dear, if you want, you can also do centerless internal grinding. Let me check if something is available for us over here, so it will become much better. Yeah, I think it is there. You check if some real video is there. Centerless internal grinding is there. Why it is internal, not centerless? No problem if it is not there. This is again centerless external grinding. And I don't know what is this. Bro, forgot to evolve. Everything is external only. Nothing internal. शुरू में दिखा था बट उसका कुछ लेक्चर होगा ऐसा लग रहा है, फोटो तो अच्छा लगाया इसने. Streamline these ideas. What do you need for Emily? I'm glad you're back. For the internal circuit. बेहतर होगा अगर मैं इसको कट करूं और डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर दूं और इसका सर्च करूं मैं इमेजेस में तो मजा आविच. यस, दिस इज गुड वन.
Yeah, nice one. So you can observe, it's not like the centerless grinding will only happen externally. You can also do centerless internal grinding. So as you can see, this is that workpiece surface. And since you have to do internal grinding, so what kind of workpiece will be there? Obviously hollow. So this hollow workpiece is there. And outside, large size control wheel is there and a small size grinding wheel is there inside. Outside this, there is a large size control wheel. Inside there is this a small size grinding wheel. And then up and down, you can see a pressure roll and a support roll has been provided. Yes, a pressure roll and support roll has been provided. And internally the grinding is going on. So here also the same principle acts. You know, the grinding wheel and the control wheel, again their axes will be there at certain angle. Due to that angle, this hollow workpiece will automatically be fed and will be grinded internally. So that's the setup of centerless internal grinding operation. And if you want to, you see, draw it on your own, so you can draw it so very easily. You just have to draw certain number of large and small circles. Large circle over here is the control wheel, let us say rotating in this direction. Then my dear, let us say that's there your workpiece, which is the hollow one. Wow, wow, just wow, right? And then my dear, we have this a small wheel, which is the actual grinding wheel. Yes, this a small wheel is the actual grinding wheel. So if it is rotating like this will be rotating like that. Everybody rotating in this direction, this will also have to rotate in this direction. Yes. Okay. And then we have these two wheels. One is support, one is pressure. This is that support wheel. That's there the pressure wheel. So if you want to see this, so this is that regulating wheel. This is that workpiece. This is that grinding wheel, support wheel. This is that pressure wheel. Same setup was there. Got it? Now, my dear, I have one question. By using grinding, can you make tapered surfaces? Is it possible to grind tapered surfaces with the help of grinding wheel?
Yes. And that's a beautiful process. I'll show you. Hold on. Just a minute, guys, 1 minute. One minute, guys, 1 minute. Okay, guys. So I'm back. There is this process called as tapered surface grinding. So let me draw it first. There's the problem. It's और clearly visible है ना?
उसी में यहाँ, बट कोई नहीं, चलो ये थोड़ा सा ऐसा दिखेगा, दिख तो नहीं रहा है ना आप लोगों को? हाँ नहीं, थोड़ा बहुत दिखता है, वो चलेगा, फाइन, नो प्रॉब्लम। सो basically along this axis, this will made to rotate, and there will be the grinding wheel kept here. This is that grinding wheel. So the grinding wheel will rotate, and this angle over here is theta. So as you will tilt this platform at certain angle theta, at the same angle this taper will be made. This angle will also be here theta. So this is what we call as, my dear, tapered surface grinding. Understood? This is what we call as tapered surface grinding. And yes, as per our wish, this workpiece platform can also be moved in these directions. Yes, to adjust the location of the grinding wheel over the surface. Fine. So my dear, you understood centerless grinding, you understood tapered surface grinding. I'll give you a 10-minute of break. We'll meet at 3:03. Okay? PM. And we'll continue up till 4.
ये वो वाला माइक का तार जो ना वायर उसको ना वो हाँ ताकि वो इसको पकड़ कर रखना फिर अच्छा तो उसमें कैसा है ये वीडियो कितना है और इसमें 6 लाख का इसमें सवाल बने जा रहा इसमें ग्लास मिलेगा से बारे में इसमें ग्लास आ रहा है नहीं लगा हुआ है पटना वाला ग्लास लगा हुआ है सिर्फ अपने पटना वाला कुछ का पता उतना बड़ा पीछे रखो हाँ पहले वो बनाए थे कैमरा देखना
हेलो पीपल, रिकॉर्डिंग तो ऑन हो गया ना? नहीं सर। चलो, अब एक दूसरा प्रोसेस है, उसका नाम होता है क्रीप फीड ग्राइंडिंग। क्रीप फीड ग्राइंडिंग में दोस्तों क्या होता है, एक बहुत बड़ा लार्ज साइज व्हील यूज करते हैं। वी यूज लार्ज साइज ग्राइंडिंग व्हील एंड this grinding wheel rotates at very high speed. Moreover, this grinding wheel has very much open structure. You all know about structure that we had discussed studying the class, that the space between its grids will be high, large. And my dear, the grids are also coarse in this wheel. Large size grids will be there. What we do is, as the wheel rotates and workpiece is fed, and there will be this supply of cutting fluid in very large volume. So the feed will be there in this direction called as down feed. It's basically kind of like depth of cut that you are getting because of this. This down feed will be such high that you will get very large depth of cut through grinding in a single pass. Yes. So this down feed is very high. Due to that reason, the depth that you got in single pass will be very high. By the way, table feed is less. Table feed is low. So high depth of cut you achieve in a single pass. And doing this is what we call as, very simple, creep feed grinding. Because you know, normally the grinding is not suitable for large depth of cuts. But suppose if the situation arises in such a way that you want to cut
large depth of cut, that too by grinding operation, then we increase the down feed, but to compensate for that increased down feed, we decrease the table feed. Okay? And that is how, my dear lovely students, you will be able to cut larger depth of cut in a single pass. Recording off है. अरे पूछा था किसी से, हाँ recording on है, पूरा हाँ on है. Okay, so what happens there, my dear, in this operation called as creep feed grinding, is there will be this large size wheel, and its grids will have open structure, and the grids will also be larger, coarser grids, and this down feed of the wheel will be very high, but the table feed will be very low. So generally what happens, grinding operation has been designed for a smaller depth of cuts. But suppose if it becomes very much necessary that you have to cut larger depth of cuts, but by grinding, then in that case we use creep feed grinding operation, where we keep the down feed very high, but at the same time the table feed is very less, because to compensate that high down feed, table feed is decreased, because again grinding is not designed for a high MRR operations. So if you keep the depth of cut very, sorry, down feed very high, at the same time if you keep table feed very high, then this thing will become very much mushkil, difficult to be done by grinding. So if you ask someone asking you what is the necessity of creep feed grinding, so you can answer him very easily that to cut larger depth of cut in a single pass, we use creep feed grinding, where the down feed is increased a lot, but to compensate for that increased down feed, my dear students, we decrease the table feed. Then, my dear, the another and last operation is what we call as cylindrical grinding. There is another operation what we call as cylindrical grinding. And that centerless grinding that I told you now, that's of very high importance for upcoming GATE exam and exams, I can say. That formula, always remember, feed pi dn upon sine theta. सर सर ये क्रीप फीडिंग में हमने ओपन स्ट्रक्चर यूज करा था ना, वो इसी हाँ। वजह से करा था ना कि वहां पे मटेरियल ज्यादा रिमूव होगा तो लोडिंग ना हो उसकी। नहीं, वहां क्या डेप्थ ऑफ कट बहुत ज्यादा है, तो चिप्स जो बनेंगे ना, बहुत ज्यादा डेप्थ ऑफ कट रखोगे, चिप्स जब बनेंगे तो वो लाइक ऐसे इतने लंबे लंबे बनने लगेंगे, राइट? यस सर। तो उसको एकोमोडेट करवाने के लिए स्पेस भी तो सफिशिएंट रहना चाहिए इसके लिए। ओके सर। चलो, सो एक्सटर्नल सरफेस, सॉरी, सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग क्या है कि आपके पास लाइक एक चक होगा, यू विल हैव अ चक, in that chuck the workpiece will be loaded.
That chuck होगा. In that chuck, this workpiece will be there. And क्या हो रहा है? ये अपने आप हो रहा है भाई, ये तो यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है. चलो, this is the workpiece, and the chuck will rotate. So the workpiece will rotate, and that side there will be the grinding wheel. So as the grinding wheel rotates, my dear, what happens that the workpiece also rotates, and workpiece is rotated between these centers like headstock, tailstock. This, let me say, opposite direction bit. So here in this case, this is that grinding wheel. This is that workpiece. One important thing that you should remember here, the workpiece rotates at relatively slower speed. Workpiece than grinding wheel. And workpiece is mounted between work centers there will be like this chuck, then this center. This is how it is done, and this cylindrical grinding is mostly suitable for external surfaces. Okay, but my dear, if required, the same thing can also be used for internal surface grinding. For that, just the holding setup will change. So such sort of grinding machines are available, which can do both external and internal grinding.
but mostly suitable for external grinding only. So these were the different types of grinding processes that we have learned. The centerless grinding process, the tapered surface grinding process, the creep feed grinding process, and this cylindrical grinding process. Okay. Now, we have some surface finishing operations apart from grinding, but that we will learn in the end. Okay, this time we'll be learning there in the end. Okay, now can you tell me there, what is there in the schedule, that next topic after grinding? ड्रिलिंग सर, ड्रिलिंग ड्रिलिंग है, इसके बाद ड्रिलिंग है क्या सिले उसमें अपने टॉपिक में? यस सर। ठीक है, ड्रिलिंग ही स्टार्ट करते हैं सर। ब्रोचिंग मिसलेनियस टॉपिक में होगा सर फिर? क्या है ब्रोचिंग सर मिसलेनियस टॉपिक में होगा? हाँ, ब्रोचिंग लिखा हुआ था क्या बीच में कहीं? नहीं सर, था नहीं। हाँ, तो उसको मिसलेनियस में डालेंगे। ओके सर। हमने किया मिलिंग खत्म, ग्राइंडिंग खत्म, सरफेस फिनिशिंग भी जाएगा मिसलेनियस में, ब्रोचिंग भी जाएगा मिसलेनियस में। लेट्स बिगिन विथ ड्रिलिंग फर्स्ट। ओके, 2-3 डाउट है सर, छोटे छोटे से। बहुत क्या कह रहे हो सर? 2-3 डाउट है सर, छोटे छोटे से। 2-3 डाउट है सर, डाउट मिलिंग से रिलेटेड डाउट्स हैं? हाँ सर। पूछिए सर हर कई जगह देखा है जब इंडेक्सिंग में मिलिंग लिखी होती है सर, ऐसा क्यों होता है जबकि दोनों अलग चीज है वो? तो एक काम करो ना, एक शब्द बोलो और 2 सेकंड रुक जाओ। सर मैं पूछ रहा था कई जगह सर ऑनलाइन नहीं रुक रहे हो, नहीं रुक रहे हो, नहीं ऐसा करो, बोलो मैं, फिर रुको, ये, फिर रुको, बोल, सर मैं ये बोल रहा था कि कई जगह ऐसा देखा है कि इंडेक्सिंग में मिलिंग लिखा होता है जबकि ये दोनों अलग चीज होती है। ऐसा क्यों सर एक साथ लिखी होती है ये? कई जगह लिखा हुआ देखा तुमने इंडेक्सिंग इन मिलिंग। हाँ सर, जबकि अलग अलग चीज है दोनों। तो हाँ तो सर अलग अलग चीज है ना, ये तो एक साथ नहीं होनी चाहिए ना लिखी हुई। मतलब कुछ होता है क्या ऐसा? मतलब मिलिंग करने समय इंडेक्सिंग करते हो और तुम चाहो तो और दूसरे ऑपरेशन करते समय भी इंडेक्सिंग कर सकते हो। अच्छा, वो तो कर सकते हैं। हाँ अच्छा सर, हाँ सर, हाँ सर, ओके सर। सर एक चीज और पूछनी थी सर, इंडेक्सिंग तो एक तरीके से मतलब सरफेस को डिवाइड करना हो गया 360 डिग्री में पेरीफेरी को। इंडेक्सिंग का मतलब ये हो गया कि सर्टेन सब डिवीजन करना। हाँ, सर्टेन पार्ट्स में किसी भी एक सर्कुलर पेरीफेरी को सब डिवाइड कर देना इंडेक्सिंग कहलाता है। तो सर ये हम जो है ये सर हम सब यूनिवर्सल हेड मशीन की हेल्प से करवा रहे हैं क्या? यूनिवर्सल ये जो हम कर रहे हैं यूनिवर्सल हेड मशीन की हेल्प से कर रहे हैं। यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड एक ऐसा मशीन है जो सबसे पॉपुलर है, सबसे बढ़िया है, क्योंकि उसपे हर तरह का इंडेक्सिंग हो जाता है। डायरेक्ट इंडेक्सिंग करना चाहो डायरेक्ट इंडेक्सिंग कर लो, यू वांट टू डू रैपिड कर लो, मतलब सिंपल यू डू सिंपल, यू वांट टू कंपाउंड इंडेक्सिंग, यू डू कंपाउंड इंडेक्सिंग, यू वांट टू डू डिफरेंशियल। सो on that machine, with the help of that head, universal dividing head, you can do all type of indexing, so that is most popular. तो सर उसके अलावा कोई और मशीन है? उसके अलावा कोई सेटअप होता है? आउटडेटेड है सब। अच्छा अच्छा। और सर एक चीज पूछनी थी, क्या था वो सर? हाँ, जैसे वो वॉर्म व्हील में 40-30 दिखाए थे, तो हमने जितने भी फॉर्मूले बनाए थे 40/n बनाए थे आईसीएम के, है ना? अगर किसी क्वेश्चन में 40-30 नहीं देते हैं और वो कोई भी चीज दे देते हैं 280 या 56, तो उस हिसाब से हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना? वो बिल्कुल, मान लो वो कहते हैं कि अगर वॉर्म व्हील में 60 टीथ है तो फार्मूला बन जाएगा 60/n। तो जितने भी इंडेक्सिंग हमने करी है फिर 60/40 होल रोटेशन ऑफ crank, one tooth will advance, that worm wheel will get 1/60th of a revolution. So formula instead of 40/n will become 60/n, and that is going to be a nice question by the way. अगले टेस्ट में जब आप लोग का बैच खत्म हो जाएगा तो डालूंगा। अच्छा आइडिया दिया। और सर एक चीज भूली लास्ट, जो इंडेक्सिंग होती है सर, ये मतलब ऑटोमेटिक होती होगी ना सर? वैसे तो ये सेमी ऑटोमेटिक या फुल ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक किसके बारे में कह रहे हो?
सर जो मतलब जो भी हमें थ्रेड कट करना है, बोल्ट बनाना है, वो तो मास प्रोडक्शन में होता है, तो ये इंडेक्सिंग ऑटोमेटिक हो सकती है सर, मतलब फिर? हाँ, सीएनसी में ऑटोमेटिकली होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बस ये 4-5 चीज पूछनी थी। ओके हाँ, सर। उधर माइक्रो प्रोसेसर को लेकिन इन्वॉल्व करना होगा, क्योंकि प्रोग्राम करके उसको दोगे तब तो ऐसा करेगा वो। यस सर, यस, थैंक यू सर। ओके, एनी मोर डाउट? गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी ये अगर वर्कपीस की स्पीड स्लो फास्टर कर दें ग्राइंडिंग व्हील से, हम्म। तो क्या अंतर आएगा? अगर कहीं कहीं मैंने देखा है वुड पे और वर्कपीस पे वर्क होता है जिसमें टूल मैनुअली यूज होता है। नहीं नहीं, अगर वर्कपीस का आप स्पीड हाई कर देंगे तो ग्राइंडिंग अच्छे से नहीं होगा, हम्म। बस। वर्कपीस स्लोली, क्योंकि उसको फीड किया जाएगा ना ग्राइंडिंग व्हील को, लेफ्ट राइट। हम्म। तो जैसे मैंने कहीं कहीं देखा है कि लैम्प बनता है या कोई टूल बन रहा है एक टूल से, तो उसमें मैनुअली यूज करते हैं, तो उसमें कहीं कोई एरर आ जाता है कि मतलब उसकी एक्यूरेसी में कुछ दिक्कत रहती है, कमी रहती है? मैनुअल वर्किंग हमेशा टाइम कंज्यूमिंग होता है, एरर के चांसेस तो होते ही हैं, चाहे वो मशीन करे या मनुष्य करे। जी आदमी सर। करे या मशीन करे, एरर का चांस हर जगह है। हम्म। बट आदमी को हटा के मशीन इसलिए लगाया जाता है ताकि टाइम सेव हो जाए, टाइम सेव होगा तो पैसा सेव होगा, तो कंपनी का फायदा होगा, फायदा होगा। स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। हाँ, आज तो कुछ नहीं हुआ, आज बस रह गया मार्केट जहां था वहीं पे बैठा हुआ। हाँ सर, सर बहुत ट्रेंडी चीज है, मतलब उसको समझना आसान नहीं है। क्या आसान नहीं है? स्टॉक मार्केट सर। हम लोग के साथ रहोगे तो समझ जाओगे, सर जैसे कहेंगे लगे वैसा नहीं। लगे हुए हैं चलिए, सर। एनी मोर डाउट नहीं है ना, आगे बढ़े? जी सर। चलिए, लेट्स बिगिन ड्रिलिंग। So what happens basically during the drilling operation, my dear? महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, महबूब मेरे, महबूब मेरे, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है, महबूब मेरे, महबूब मेरे, वो तो नहीं तो। खुदा की कसम। क्या गाए, क्या गाए, गाओ गाओ गाओ। तो ये गा गाना के- है आपका वाला। कैसा डायग्राम बना, शाहरुख खान टाइप? जी सर। ये आपका मास्टर है ही शाहरुख खान, दिक्कत ये है कि ज्यादा पढ़ाता नहीं है मास्टर। अरे सर बहुत बढ़िया पढ़ाता है, गाता भी बहुत बढ़िया है। पढ़ाते तो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई शक ही नहीं, जी सर। लेकिन दिक्कत है कि हमसे 1.5 घंटा से ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता एक लेक्चर। हम्म। इसका ये मतलब नहीं कि हम रट के आते हैं सारा लेक्चर, ऐसा हम्म। मत समझना। जी लेकिन सर। 1.5 घंटा ऐसी होता है तो मेरा मन ऐसा करता है कि छोड़ो, अब नहीं पढ़ा। और बाबा है एक हमारे,
हाँ सर। भाई उनका जिंदगी भर मन करता है कि वो पढ़ाते ही रहे। हाँ सर, उनको कहा तो 10 घंटा क्लास ले लो, आराम से ले लो। वो सन्यासी हैं अभी। सन्यासी आदमी है ना। हाँ, तो बैठे हुए पर्वत के नीचे। बाबा है बाबा। जब देखो क्लास क्लास, थोड़ा सा चिल मारो यार, जिंदगी है। हाँ? क्लास क्लास क्लास, नो क्लास। वैसे डायग्राम्स में अच्छे बनाता हूँ, ऐसा लोग कहते हैं। जी सर, तुम लोग काफी नहीं अच्छा। कहते हो, कहा जी जी कर रहे हो, अपनी बड़ाई हमें खुद करनी पड़ती है यार। हाँ? ये कोरा ओरा पे भी लिखो कि राजीव सर बहुत बढ़िया टीचर है, सबके बारे में लिखा हुआ है। मैं भी 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे बारे में नहीं लिखा हुआ है। तो हमने इसके ऊपर काफी सोचा, तो पता चला कोई लिखता विखता नहीं है, लोग लिखवाते हैं। हाँ। समझे? नहीं तो ऐसा तो है नहीं कि सबका लिखा। भाई 12-13 साल से मैं भी पढ़ा रहा हूँ, खराब नहीं पढ़ा रहा हूँ, नाम ठीक ठाक है। तो मेरे बारे में क्यों नहीं लिखा भाई? तब पता चला हो इसका एक ही मतलब है कि लोग लिखवाते हैं। तो ड्रिलिंग, इट इज एन ऑपरेशन to cut cylindrical holes in workpiece. By the way, if I show you the drill over here once again, डूम डूम रगा 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 डूम डूम रगा रगा, और देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। ना 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 ना। देखा होगा। Okay, so this is one cutting edge over here, and this is another cutting edge over there. ड्रिल बिट में कितने कटिंग एज होते हैं दोस्त? 5 सर। क्या बोलता है? ड्रिल बिट में कितने कटिंग एज होते हैं? 5 सर। बात तो सही है। सच बात बताऊं तो ड्रिल बिट में 5 कटिंग एज होते हैं, लेकिन तुम लोग कैसे पता है जी? सब नोट्स छाप दिया है। सर टू कटिंग एजेस सर। सर लास्ट 2 कटिंग एजेस सर। Hey Magesh, drill bit has 5 cutting edges. Really, I'm telling you. That's the beauty of drill bit. That no one knows except Rajiv sir's student. यस सर। So by the way, out of these 5 cutting edge, these are the 2 main cutting edges. Okay. And that angle made between these 2 main cutting edges, na, don't worry, I'll explain how 5 cutting edges. Not now, tomorrow. So this angle is what? Theta. And here this angle theta is what we call as point angle. Kaun sa angle? Point angle. Yes. So theta is what we call as point angle. So you feed this drill into the workpiece in this direction, like let us say f millimeter per minute, and तो you roll. वो हाँ? ड्रिल की टिप बनाई है ना आपने, ग्रीन कलर की, ये जो नहीं, मटके नहीं। है बीच में।
क्या? सर ये जो ग्रीन कलर का आपने बनाया ये ड्रिल मशीन की जो टिप होती है वो बनाई है। हाँ, ड्रिल बिट की जो टिप होती है, ड्रिल बिट का जो राइट सर। होता है, साथ के साथ ऐसे ऐसे घुमावदार रास्ते होते हैं ना उधर, जी सर देखा हुआ है। हेलिक्स, फ्लूट्स भी बोलते हैं, वो फ्लूट्स भी बनाया है मैंने, राइट? यस सर। हाँ, ओरिजिनल वाला वीडियो दिखाऊंगा, कल दिखाऊंगा, आज नहीं। चलो, तो होता क्या है कि मान लो वो ड्रिल वैसा दिख रहा था, अभी थोड़ा सा इसको बदल देते हैं, मान लो ऐसा है ड्रिल, ठीक है? चलो, ऐसा होता नहीं है लेकिन मान लेते हैं कि चलो ऐसा है। और लेटर से आपका वर्क पीस जो है वो नीचे यूं रखा हुआ है। अब क्या है कि ये जो ड्रिल है, दिस ड्रिल व्हिच इज देयर starts traveling from there and then it comes in contact with the workpiece. See, right now it is here, means the position is here. Right now, this is its position. So from here it will now start to travel, okay? And then after, like suppose its position is there. So after traveling like this much of direction, let me pull it back a little. So like after traveling from started from here, let us say, and then it traveled up till this. So this travel distance which is there, this is the distance when it travels, then it comes in contact with the workpiece. Now it comes in contact with the workpiece. So this travel is what we call as approach. Okay. Now, or not approach like this. This is not the approach. I'm sorry. Sorry. Let me draw that drill bit again. गम जुदाई का उठाते हैं लोग बड़ी मुश्किलों से, क्या क्या सितम करते हैं बरस के समान, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। सुना है कभी कोई बाबा भी गाते रहते क्लास में, देखा है? तो बाबा भजन करते हैं भजन। बाबा भजन कीर्तन करते हैं ना। एक साकार संत होता है, एक निराकार। तो आप तो देखो ड्रिल बिट वहां से चल के यहां तक आया, तब जाकर के वो कांटेक्ट किया वर्कपीस को। तो इस डिस्टेंस को जो वो ट्रैवल किया, इससे पहले कि वो वर्कपीस को कांटेक्ट करता, इसको हम लोग कहते हैं अप्रोच। क्या बोलते हैं? अप्रोच। और ड्रिल करने के बाद
आपका ये ड्रिल बिट उल्टा क्यों बनता है भाई? तो सीधा हो जा। यस बाबा। 1 minute, 1 minute, 1 minute. So yes, babies and babas, listeners, what I told us कि वो चलते चलते इतना दूर आ गया तो हमने कहा ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया वो है ओवर ट्रैवल। ए मगेश, आई विल किल यू मैन। This is the distance that it travels before coming in contact. So that distance of travel of the drill bit is called as approach. And then after drilling, this drill bit comes out and travels, let us say, certain extra distance. So that is what we call as over travel. Now, my dear, let us say the thickness of the workpiece that you are drilling is from here till there is T. So when this is done, so what you observe that this hole that you made, that hole is through the workpiece, आर पार हो गया। ओवर ट्रैवल करने की वजह से होल क्या हो गया? आर पार हो गया। थ्रू, due to this over travel, what happened? The hole went through the workpiece and went like from this side. If you see, you can see to the other side, and such side type of hole that if you make is what you call as through hole. ऐसे होल्स अगर आप बनाते हैं, these holes are called as through holes because it goes through the workpiece. आर पार हो गया, आर पार हाँ, बार बार हाँ, through hole. And then here, suppose instead of that, my dear, if the workpiece is like this and you made the hole with the help of drill, the drill was kind of like here. So before coming in contact, the drill will have to travel by the way this much. So again here, this is what we'll call as approach. But what is happening here? The drill
drilling ends, let us say here. No more drilling after that. So the total thickness of the workpiece, let us say if it is T, then this whole T has not been drilled. Out of this total thickness T, only a certain length L has been drilled. Only this much L has been drilled. Here, whole length L and thickness are same, but here the thickness of the workpiece is greater than the whole length. If this happens, you call it as blind hole, right? Means in case of blind hole, there is no over travel by the way. This whole diameter of the hole, this whole diameter of the hole will start getting drilled only when this point on the drill bit reaches there. So my dear, that's why this much of the travel that is happening is what we call as compulsory approach. We call as compulsory approach. And yes, this we can find very easily. And here as well, there will be this compulsory approach. Here also, there will be this compulsory approach. Both cases. LA is approach length. LO is over travel. LC is compulsory approach. And dear, don't fear. T is workpiece thickness. Way. So my dear, if I tell you in that both cases, suppose if the drill is being rotated at n RPM, suppose the drill is being rotated at n RPM, किधर गया रे बाबा? And if it is being fed at speed feed F, it is being rotated, let us say, at n RPM. And being fed at this speed F. Sorry, at this feed F. So my dear, feed is there like having the unit millimeter per minute, and n is having the unit like revolution per minute.
So if you multiply both these things, then you know millimeter per revolution multiplied by revolution per minute. Revolution will cancel. It will become millimeter per minute. That means the travel speed of the drill into the workpiece will be Fn millimeters per minute. So this drill is traveling in this direction at Fn millimeter per minute, and the whole length that you have to cut is L, which in case of through hole is workpiece thickness, equal to workpiece thickness. But in case of blind hole, it is less than workpiece thickness. So if someone asks you that find the drilling time, so we will find the drilling time with the help of this formula, which tells us TD is equal to capital L upon Fn, where L is actually equal to L plus LA plus LO plus LC. Now, sir, why not only small L? Because, my dear, it will take time to cover that approach length. It will take time to cover the compulsory approach length. It will take time to cover that over travel length. Sir, but suppose in some question they have not given an approach, means they have not approached, don't take the approach, neglect it. Suppose in some case they have not given that over travel, they have not taken over travel, okay, neglect it, no problem in that. If that approach over travel both are not given, take only a small L and LC. So what is LC? How to find LC? Will they give? If they give, fine. If they don't give, you can find LC. How? This is how you can find that LC. मैन्युफैक्चरर की मशीन में होगा शायद. हाँ, एलसी मैन्युफैक्चरर की मशीन में दिया होगा. एलसी निकाल सकते हैं हम लोग, देखिए बताते हैं आपको. हाँ बोलो. यूनिट सर थोड़ा चेक कर लीजिए पिछले वाले स्लाइड पे. क्या यूनिट्स? सर यूनिट एफएन की यूनिट जो आपने मैच करी थी ना, उसमें प्रीवियस स्लाइड में सर कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? नहीं सर, बस रेवोल्यूशन तो पता नहीं यूनिट स्लाइड में जो थी वो मिलीमीटर पर मिनट आपने लिखी थी, इसमें रिवॉल्यूशन भी ऐड होना चाहिए वैसे. क्या ही तो बात है, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे. बोला सही था लेकिन, राइट? बोला था ना मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय रेवोल्यूशन पर मिनट विल बिकम मिलीमीटर पर मिनट. ठीक है, उतनी गलतियां तो ब्रह्मेश्वर बाबा भी करते हैं, मैं तो राजीव बाबा हूं. बोला सही, लिखा गलत तो गलत नहीं कहा जाएगा. अब गलत गलत गलत. भैया जी, क्या यही एलसी है? यस, यही एलसी. क्या यही प्यार है? हाँ हाँ, यही प्यार है. दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं. क्या यही प्यार है? हाँ हाँ, ये अरे दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं. दा 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 ये डायमीटर का आधा होगा, ड्रिल डायमीटर का आधा. तो कंपल्सरी अप्रोच बच्चा, यू कैन फाइंड हियर, you see, tan theta by 2 is equal to d by 2
upon LC. So LC will become d by 2 upon tan theta by 2. ठीक है। अच्छा वैसे पता है एक काम कर दूं, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। यहाँ थीटा ले लिए थे ना, थोड़ा नाम चेंज करें क्योंकि पिछले नोट्स जो आपके होंगे उसमें नाम अलग होगा, उसको बदल देते हैं। 2 बीटा लिखा था ना यहाँ, सर 2 बीटा है ना? हाँ सर। यस सर। देखता हूँ लीट हो पाएगा तब तो हो रहा है। वाह वाह वाह, जिंदा है तो प्याला पूरा पी ले, कच्चा। बीटा को क्या कहेंगे? हाफ पॉइंट है। जिंदा है तो प्याला पूरा भर ले, कंचा। जिंदगी का ले मजा तू, दीने जिंदा है तो प्याला। क्या है भैया ये यार? जुदाई को उठाते हैं। ठीक है, नहीं ठीक तो नहीं लग रहा है। This will be your half point angle and this is your diameter का आधा d by 2 tan beta LC will be equal to so compulsory approach you can also write like yes. So this is how you can find. Now that means to find that compulsory approach you need that angle. If that angle is not given, what to do? Neglect LC as well. Okay, neglect LC as well. Fine. सर हाँ सर, सर mm पर रिवॉल्यूशन तो f by n आना चाहिए ना? mm per revolution f by n आना चाहिए ना? फीट by n। ना ना टाइम का कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, एल बाय एफ एन। नहीं समझ में आता जो फिर से पूछ रहे रिपीट हो। करना। अरे mm पर रिवॉल्यूशन इनटू रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन कट जाएगा mm पर। इट इज mm per minute. f इंटू n ही होगा, f बाई n नहीं होगा। सही है। आज 14 से था ना? यस सर। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। प्रणाम गुरु जी।
बाय बाय।